Welcome in trigonometry part 45 of this inverse circular function. In this part we want to solve two more problems. Let us say your problem number 1, you note down. Prove that प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना है? साइन कॉट इनवर्स टेन कॉस इनवर्स एक्स equal to x. This is what is your question. Sin cot inverse 10 cos inverse x. Sin cot inverse 10 cos inverse x equal to x. This you have to prove. Okay. So let us see what is. Question is clear. You have to prove left hand side equal to right hand side. Right hand side is only x, and here 1, 2, 3, 4 terms are there. So let us start from left hand side. Generally for proving this type of question we start from left hand side. Sin cot inverse 10 cos inverse x. Okay, once let us write. In order to simplify it, first of all we convert this cos inverse x into tan inverse. ये cos inverse को पहले हम लोग tan inverse में convert करेंगे. Why? Because if you convert this cos inverse into tan inverse, then you can use tan inverse x equal to x. Tan inverse x equal to x. So why we first try to convert this cos inverse x into tan inverse. How? You have to convert cos inverse x. So let this equal to theta. जिसको convert करना है उसको theta मान लीजिएगा. cos inverse x को convert करना है, let cos inverse x equal to theta. Okay. And if cos inverse x equal to theta, then obviously cos theta will be your x according to the definition of inverse function. Then after you will prepare a right triangle in this way. This is 90, take the equiangle as theta. And if you are taking this angle theta, cos theta is x, x means it is x by 1. And cos theta is base by hypotenuse. So this is your base and this is your hypotenuse. So obviously for this theta angle, base is x, hypotenuse is 1. So you can find the third angle, a third side. This is perpendicular, root under hypotenuse square minus base square. So now perpendicular, base, hypotenuse, all the three sides are there for angle theta. Okay. Now you want to convert this into what? Tan inverse x. So we find tan theta. जिसमें कन्वर्ट करना है वो निकालिएगा. tan में कन्वर्ट करना है तो tan थीटा निकालेंगे. साइन में कन्वर्ट करना होता है तो साइन थीटा निकालते हैं. कॉस में कन्वर्ट करना रहता है तो कॉस तो था ही. कॉट में कन्वर्ट करना रहता है तो कॉट थीटा निकालते हैं. इस तरह से जिसको कन्वर्ट करना था उसको थीटा एज्यूम करके तीनों साइड निकाल लिए. अब जिसमें कन्वर्ट करना है उसको निकालेंगे. क्यों tan थीटा निकाल रहे हैं कि फिर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा दूसरे साइड. और थीटा क्या है? तो इस तरह से cos इनवर्स x चेंज हो जाएगा tan इनवर्स में. इसीलिए तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई बेस
This is your tan theta, and therefore theta means cos inverse x. This is theta equal to this side tan inverse root under 1 minus x square by x. This is your cos inverse x in term of tan inverse. So now in place of cos inverse x we can write tan inverse this. So you can write sin cot inverse tan cos inverse x can be written as tan inverse root under 1 minus x square by x. See, now it is of the type tan inverse x. Tan inverse x is x. So sin cot inverse tan inverse x, this complete is x, means root 1 minus x square by x. I think you have understand the thing. Now it is sin cot inverse this. So in order to simplify, you have to convert this cot inverse into sin inverse, so that you can use sin inverse x equal to x. So now we convert this cot inverse into sin inverse. So let us see. We have to convert cot inverse. So we write cot inverse root under 1 minus x square by x equal to, let us suppose, theta. जिसको कन्वर्ट करना है उसको मानना है. अब यहाँ से आपको मिलेगा cot थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स. प्रिपेयर ए ट्रायंगल. cot theta is base by perpendicular, so base is root under 1 minus x square, perpendicular is x. So you have to calculate hypotenuse. Yeah. What will be hypotenuse? Root under perpendicular square plus base square, this square 1 minus. So this will be equal to 1 simply. Hypotenuse will be your 1. So in this way all the three sides has come. Now you have to convert it into sine. So we find sin थीटा, जिसमें कन्वर्ट करना वो निकालेंगे. sin थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस x. सो थीटा विल बी sin इनवर्स x. थीटा मीन्स ये है ना थीटा, तो दिस कैन बी रिटन एज sin इनवर्स x. सो sin cot inverse this can be written as sin inverse x. Now it is of the type sin inverse x equal to x, which is your right hand side. In this way we can prove this type of problems. Note down next problem, problem number 2. Evaluate tan half cos inverse root 5 by 3. Okay, you have to evaluate tan half cot inverse root 5 by 3. Yes, this is the question. Now let us see how can we find this. So we can rough this side.
let us see. Here also the problem is half 10 half cot inverse root 5 by 3. Okay, same as we have done in the previous question. Here it is cot inverse, so we try to convert it into tan inverse. ये cos इनवर्स में है, यहाँ 10 है, तो इसको हम लोग tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे. लेट ये जो cos इनवर्स रूट 5 by 3 इसको कन्वर्ट करना है, तो जिसको कन्वर्ट करना है उसको थीटा सपोज करेंगे. सो यहाँ देखिए, सो यू विल गेट cos थीटा इक्वल टू रूट 5 by 3. Yes. Now you have to convert it into किस में बदलना है आपको? 10 में. ओके, पहले राइट ट्रायंगल बनाइए. Let us take this angle theta. Cos theta is your base by hypotenuse. So base will be your root 5 and hypotenuse 3. Cos theta is given root 5 by 3 and cos theta is your root 5 by 3. So base will be taken as root 5 and hypotenuse is 3. So we find the remaining side. Remaining side means perpendicular. Perpendicular will be hypotenuse square minus base square. So perpendicular will come 2. You have to convert it into 10. 10 में convert करना है. So you find tan theta. Tan theta will be perpendicular by base. And therefore theta means this is your theta. Cos inverse root 5 by 3. Cos inverse root 5 by 3 equal to tan inverse 2 by root 5. This. So therefore we can write 10 and 1 by 2 cos inverse root 5 by 3 can be written as tan inverse 2 by root 5. Okay, let us keep it equation number 1. Okay, now see, it is tan inverse x, but it is not in this form. This half you have to remove. ये जो हाफ है इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा. हाफ नहीं रहता तो फिर tan इनवर्स x x हो जाता है. दिस इज द प्रॉब्लम हियर. सो यहां पर आप क्या कीजिए, इसको अगर हम 2 थीटा ले लेते हैं तो 2 2 कट जाएगा, थीटा आ जाएगा. सो लेट tan इनवर्स 2 बाई रूट 5, इसको आप 2 थीटा ले लीजिए. सब जगह थीटा लेते थे ना, यहाँ 2 थीटा लेंगे. क्यों? ये 2 थीटा लेंगे तो 2 2 कट जाएगा, 10 ये थीटा बन जाएगा, 10 थीटा बन जाएगा. यहाँ 2 थीटा लिखने से 2 2 कटेगा तो 10 थीटा हो जाएगा ना. तो दिस इक्वल टू 2 थीटा. वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 थीटा. यहाँ से 10 थीटा निकालेंगे. जरा देखिए, फ्रॉम हियर यू कैन राइट tan 2 थीटा is equal to 2 by root 5. Now tan 2 theta is there, 2 by root 5. You have to find the value of tan theta. tan theta निकालने के बाद यहाँ जब लिखेंगे 2 थीटा तो ये बन जाएगा tan थीटा. तो tan थीटा का वैल्यू लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा. So now from here you have to calculate the value of tan theta. How? Convert this tan 2 theta into tan theta. tan 2 थीटा को tan थीटा के टर्म में कैसे लिखेंगे? 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. tan 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है, इक्वल टू
2 by root 5, and from here we want to find tan theta. Let us multiply 2 root 5 tan theta equal to 2 minus ये tan theta का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 रूट 5 tan थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0. सब जगह 2 है तो 2 कैन बी कॉमन एंड कैंसिल, सो दिस विल बी tan स्क्वायर थीटा फ्रॉम हियर फाइंड tan थीटा. यहां से आप tan theta निकाल लीजिए. It is a quadratic equation of tan theta. So tan theta will be minus b plus minus root under b square. B square means root 5 square. 4ac, 4 into a is 1, c is minus 1. So minus minus plus 4ac by 2a. It is a quadratic equation of tan theta, so tan theta can be written as minus b, this is your b, plus minus root under b square minus 4 into a into c. C is minus, so minus minus plus. So it will gives you minus root 5 plus minus 3 by 2. So okay, no need to write anything. This is tan theta. Now you can write from 1 tan half tan inverse 2 by root 5. Tan half, we have assumed tan inverse 2 by root 5 equal to 2 theta. So here we can write 2 theta. So this becomes simply tan theta. 2 cancel, and tan theta is minus root 5 plus minus 3 by 2. So this is the value of this. So is the answer. So in this way we can solve the problems related to inverse circular function. So I hope you have understand inverse circular function and some problems related to inverse circular function. So in this video this much. You go on watching trigonometry. Thank you for watching.